So the next transistor that we are interested in is called a MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor. So it's a metal oxide semiconductor field effect transistor. ये nomenclature is based on the physical structure of the device and its operation. अभी हम इसको start करेंगे तो it will be clear कि ये nomenclature की क्या basis है. Why we call it a metal oxide semiconductor field effect transistor. So just like जिस BJTs में आपके पास दो तरह के transistors available थे. You had NPN and a dual device called a PNP transistor. MOSFET के केस में भी हम देखेंगे we have two possibilities. You have N-channel MOSFET and a P-channel MOSFET. So similarly, just like before, जिस तरह हमने BJTs में भी देखा था, हमने NPN को डिटेल में स्टडी किया और साथ साथ एक्सटेंड करते रहे using the duality principle to the PNP transistor. So similarly हम यहाँ पर N-channel पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे और उसके बाद उन आइडियाज़ को एक्सटेंड करते जाएंगे to a P-channel transistor. So we have two devices, N-channel MOSFET and a P-channel MOSFET. Let's start with N-channel MOSFET and see कि वो किस तरह की स्ट्रक्चर है और कैसे काम करती है. So हम जिस MOSFET में इंटरेस्टेड हैं वो enhancement type MOSFET है and instead of enhancement type MOSFET, depletion type MOSFETs are also possible and if time permits तो उसको भी हम briefly study करेंगे at the end. So our main emphasis will be on enhancement type MOSFET and later on हम देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग है. We'll see कि गेट पे जो वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे that will enhance the channel. So इसका मीनिंग अभी exactly आगे देखते हैं. So enhancement type MOSFET में we are focusing on N-channel enhancement type MOSFET. So we will start with N-channel enhancement type MOSFET and see कि ये डिवाइस की स्ट्रक्चर क्या है और डिवाइस किस तरीके से काम करती है. So this is the basic structure for the device. You start with a P-type substrate. So P-type substrate से आप start करते हैं. इस substrate को we also call it body of the transistor. So P-type substrate और body से आपने start लेना है. उसमें आपने दो N+ regions grow करने. One of them will be called the source region. The other one will be called the drain region. उसके ऊपर आपने metal भी grow कर देना है source region पे और drain region पे ताकि आपको terminals available हो जाएं. So you get the source terminal, you get the drain terminal. In between these ये जो इसके इन दोनों N+ regions के between जो distance available है उसमें you will grow a silicon dioxide layer. So silicon dioxide layer will be grown here and then you will metallize the entire area above that silicon dioxide and that will form the gate terminal. So this is called the gate terminal. Note करें कि gate terminal is not physically connected to the semiconductor. Instead gate terminal और semiconductor के बीच में एक insulator की layer है जो कि silicon dioxide से typically बनाया जाता है. And you also have a metallized contact with the body. So ये भी एक और contact आपने body के साथ भी achieve किए and this is the fourth terminal. So basically it's a 4-terminal device. You have the gate terminal, you have a source terminal, you have a drain terminal and you have the body terminal. So it's a 4-terminal device in essence, a gate terminal, source terminal, drain terminal and the body terminal. Gate terminal will be denoted by the symbol capital G, source terminal capital S, drain terminal capital D and the body terminal or the substrate terminal as capital B. So again you start with a P-type substrate. You create two N+ regions in that P-type substrate and the area in between these two N+ regions you grow an oxide layer which acts as an insulator, typically silicon dioxide, and then you do the metallization
on that, above that silicon dioxide layer, forming the gate terminal, the source terminal, the drain terminal. So this is the basic structure of this device. So p टाइप सबस्ट्रेट में आपने स्टार्ट करना है, 2n+ रीजन आपने क्रिएट करनी है, उन दोनों को के साथ कनेक्शंस अचीव करनी है. One of them will be called the source terminal, the other will be called the drain terminal. In between the area between the 2n+ regions, आपने silicon dioxide की layer grow करनी है, which is an insulator, and above that you will do the metallization and form the gate terminal. So gate is not physically connected to the semiconductor, and यहाँ पर बीच में एक इंसुलेटर की लेयर है, उस तरह से डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. Silicon dioxide की layer is very thin, and typically this thickness T oxide is just in nanometers. 1 to 10 nanometer is the typical thickness of this silicon dioxide layer. So we have the four terminals: the gate terminal, capital G; the source terminal, capital D; the source terminal, capital S; the drain terminal, capital D; and the substrate or body terminal, capital B. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर हमें से क्यों कह रहे हैं, that is based on the gate structure. So look here, we have a metallized gate, metal, then we have an oxide layer, silicon dioxide, and then we have the semiconductor. So gate is metal, then we have an oxide layer, then we have semiconductor. So that's why we call it a MOS, metal oxide semiconductor, metal oxide semiconductor. फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसको हम क्यों कहते हैं FET और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, because we will see के some voltage applied at the gate will determine the operation of the transistor. So some voltage applied at the gate, some voltage and hence some electric field applied at the gate terminal will mainly determine the operation of the transistor. So that's why we call it a field effect transistor. So metal oxide semiconductor field effect transistor इसको कहा जाता है, metal oxide semiconductor because of the structure of the gate, metal oxide semiconductor. Field effect transistors because some voltage and as a consequence some electric field applied at the gate basically determines the operation of the transistor, कि किस तरह से करंट फ्लो करेगा, कितना करंट फ्लो करेगा, डिवाइस ऑन होगी, ऑफ होगी, all that is determined by the voltage applied at the gate terminal. So that's why we call it a MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor. So इस स्ट्रक्चर में अगर आप गौर करें, because we have a p-type substrate and 2n+ regions, so as a consequence of this structure you get two undesired p-n junctions. One is formed between the source region and the body terminal, another is formed between the drain region and the body terminal. So you get two undesired, आप चाह नहीं रहे कि p-n junction बने, लेकिन वो स्ट्रक्चर में मौजूद है. आपके पास p टाइप का सबस्ट्रेट है और 2n+ regions हैं. So you have two undesired p-n junctions. और alternatively you can think of a poor BJT. ठीक है, ये देखें n टाइप का सोर्स है, p टाइप का सबस्ट्रेट है और n टाइप का ड्रेन है. Why I am calling it a poor BJT? Because recall करें कि BJT को एक अच्छे BJT के लिए ज़रूरी है कि the base has to be very thin and also base should surround emitter and emitter should be surrounded by and base should be surrounded by the collector terminal. Then you get good beta and as a consequence good performance of that BJT. So we can think of this structure as an undesired two back-to-back connected p-n junctions, or we can also think of it as a poor BJT present in the structure. लेकिन हम ना इसको BJT के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं, ना हम इसको दो बैक-टू-बैक कनेक्टेड डायोड्स के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं. What we want is we want के गेट की बेसिस पे सारा कुछ डिसाइड हो, गेट की बेसिस पे सारा करंट डिटरमिन हो. Or in other words, we want to use it as a MOSFET rather than two back-to-back connected diodes or an NPN transistor.
So what we need to do here is we must somehow disable these back-to-back connected diodes, और in other words हम चाहते हैं कि दोनों जो pn junctions बन रहे हैं वो हमेशा कट ऑफ रहे, और in other words हम चाह रहे हैं कि जो npn bjt बन रहे हैं यहाँ पर जो कि अनडिजायर्ड है वो हमेशा कट ऑफ रहे, ठीक है। तो इन दोनों pn junctions को हमने डिसेबल करना है, और in other words we have to make sure that both the pn junctions stays reverse biased, and as a consequence the resulting NPN transistor will also be staying cut off. So this is what we require. So ये यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने मौजूद रहना है, and what we can do is we can just disable them and ensure that they always stay reverse biased. So for that purpose what we usually do is हम यहाँ पर जो body terminal है और सोर्स टर्मिनल को हम आपस में अगर कनेक्ट कर दें तो आप देख सकते हैं कि सोर्स और बॉडी को अगर आप कनेक्ट कर दें तो ये वाला पीएन जंक्शन जो है वो कट ऑफ हो गया, बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पीएन जंक्शन, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस दिस जंक्शन इज नाउ कट ऑफ. सो ये एक मसला हमारा हल हो गया. समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल कि आप बॉडी और सोर्स को कनेक्ट करें, तो वो केस हम लेटर ऑन देखेंगे. उस केस में देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस. यू हैव टू डिसेबल दिस डायोड, but there will be some potential difference between source and body terminal, and that is called body effect. Okay, हम later on study करेंगे. For the moment we will emphasize on this case where body and source are connected together. And what about this PN junction? ये भी तो एक undesirable PN junction है, इसे भी किसी तरह disable करना है. तो इसके लिए हम ये constraint यहाँ पर establish करेंगे कि VDS will always be greater than or equal to 0 volt. देखिए अगर VDS हमेशा 0 से बड़ा रहे या 0 के इक्वल रहे तो दिस सेकंड पीएन जंक्शन विल आल्सो बी डिसेबल्ड और कट ऑफ, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर हमें नज़र आ रही है कि दो पीएन जंक्शंस यहाँ पर मौजूद हैं, एंड वी वांट द डिवाइस टू एक्ट एज अ मॉसफेट रेदर देन टू पीएन जंक्शंस. दैट प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड by connecting the source and body terminals and then ensuring that the drain to source voltage is always greater than or equal to 0 volt. तो अगर ये दो कंडीशन आप मीट कर लें तो फिर वो मसला हल हो गया. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट कि ये कोई अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स आ रहा होगा इन पीएन जंक्शंस की वजह से, उन्हें हमने डिसेबल कर लिए, एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद द मॉसफेट दैट वी कैन यूज टू अचीव द डिजायर्ड परफॉर्मेंस. So these PN junctions must be kept reverse biased by connecting the body to the source terminal and by ensuring that the drain terminal is always positive with respect to the source terminal. So when you connect the body terminal to the source terminal, so अब यहाँ पर अगर आपने body और source को आपस में connect कर दिया तो ये फिर एक ही terminal बन गया. So now the MOSFET is, when body and source terminal are connected together, MOSFET is then a three-terminal device, and the three terminals are the gate, the source, and the drain terminals. So once you achieve this connection, you connect the source terminal and the body terminal, then source and body are the same terminals, and as a consequence of that you get a three-terminal device with three terminals: gate, source, and drain. Source और body एक ही terminal हो जाएगा ना, source is equal to the body terminal here. So ये सर्किट सिंबल है जो हम यूज करेंगे. यहाँ पर आप नोट करें, यहाँ पर आपने गेट के ऊपर ये डिलिबरेटली एक गैप शो किया है विच इज इंस्पायर्ड बाय द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांजिस्टर कि गेट टर्मिनल इज नॉट कनेक्टेड टू द डिवाइस, बल्कि बीच में कोई इंसुलेटर प्रेजेंट है. सो ये आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर से इंस्पिरेशन हमने ली है और यहाँ पर एक गैप इंडिकेट किया है टू इंडिकेट दैट the gate terminal is not connected to the transistor, बल्कि बीच में एक गैप है. सोर्स एंड ड्रेन में आपने डिस्क्रिमिनेट करने के लिए यहाँ पर हमेशा यू विल प्लेस एन एरोहेड एट द सोर्स टर्मिनल. सो जस्ट लाइक जिस तरह बीजेटी में आप एमीटर के ऊपर रखा करते थे एरोहेड, और यहाँ पर मॉसफेट के केस में आप सोर्स के ऊपर एरोहेड को प्लेस करेंगे, एंड द एरोहेड विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो. So ये n channel MOSFET में the electrons will be flowing from source to drain, hence the nomenclature source and drain. So source acts as the source of carriers, drain acts as
drain of carriers, and we'll see कि gate will be the one that will control कि ये flow किस तरह से होगा. So electrons will be flowing from source to drain, and since electrons are negative, so that would mean that conventional current is from drain to source. So conventional current is flowing from drain to source, into the drain, out of the source. So that's why यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरो हेड हमने सोर्स पे प्लेस की है और उसमें डायरेक्शन इंडिकेट्स that is current is flowing out of the source terminal. So that is true for n-channel MOSFET. So let's now see कि गेट वोल्टेज का क्या रोल है और गेट वोल्टेज की वजह से क्या चेंजेस आएंगे. So अभी पहले केस देखें, अगर गेट पे कुछ नहीं अप्लाई किया हुआ तो then this device is just two back-to-back connected diodes and there is no mechanism for current flow, and as a consequence you get zero drain current, or in other words the device is off. So अगर आपने कोई गेट वोल्टेज नहीं अप्लाई की हुई, जीरो गेट वोल्टेज अप्लाई की हुई है, तो ये जस्ट आपके पास दो बैक टू बैक कनेक्टेड डायोड्स हैं और हमें पता है कि इस केस में करंट कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल, और इन अदर वर्ड्स ID इज इक्वल टू जीरो, और इन अदर वर्ड्स डिवाइस ऑफ है. सो हम कहेंगे कि MOSFET जो है वो कट ऑफ है. सो व्हेन गेट वोल्टेज इज नॉट अप्लाइड you have ID is equal to 0. There is no mechanism for current flow because the device acts as just back-to-back connected diodes, and you have already ensured कि back-to-back connected diodes जो हैं वो they stay cut off, and as a consequence you get an off device. What if we now apply a positive voltage? Let's now apply a positive voltage. ठीक है, अभी ये केस कंसीडर करते हैं. यहाँ पर सोर्स इज ग्राउंडेड, ड्रेन को भी फिलहाल हमने ग्राउंड कर दिया, बॉडी इज कनेक्टेड टू सोर्स एंड हेंस बॉडी इज आल्सो ग्राउंडेड, और VGS आप एक अप्लाई कर रहे हैं. लेट्स सी कि गेट का क्या रोल है. ये जो हमने सारी एफर्ट की है कि एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर ग्रो की है और उसके ऊपर मेटलाइजेशन करके एक गेट टर्मिनल इस्टेब्लिश की है, तो वो गेट करता क्या है, उस गेट का एडवांटेज क्या है, उस गेट से हमें क्या फ़ायदा होगा. सो लेट्स सी कि अगर आप गेट के ऊपर एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा. So let's apply a positive voltage at the gate terminal with respect to the source. So यहाँ पर एक positive VGS हमने apply की है. So if you apply a positive VGS, तो recall करें कि ये gate electrode positive voltage आपने gate electrode पे apply कर दी. Substrate जो आपका P type है, P type means it has abundance of holes. तो यहाँ पर एक abundance of holes available है, holes are positive. आपने गेट के ऊपर भी पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई की है, तो उसकी वजह से क्या होगी, इस पॉजिटिव वोल्टेज विल रिपेल दीज होल्स एंड विल टेंड टू पुश देम डाउनवर्ड्स. सिंस दिस गेट वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड सिंस द कैरियर्स प्रेजेंट इन द पी टाइप सबस्ट्रेट आर आल्सो पॉजिटिव और पी टाइप, so because of this gate voltage these p type carriers will experience a repulsive force and will be pushed downwards, and as a consequence will create a depletion region here underneath the gate terminal. So you get a depletion region. So हमने क्या कहा है, पहले स्टेप में क्या होगा, आपने एक पॉजिटिव वोल्टेज VG अप्लाई की, एंड दिस पॉजिटिव वोल्टेज का कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि सिंस पी टाइप सबस्ट्रेट हैज मेजॉरिटी होल्स, these positive voltage will tend to repel those holes and will push them downwards, creating a depletion region here. So ये जो हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन इंडिकेट किए ये एक्चुअली आयंस हैं. सो दे आर फिक्स्ड इन द लैटिस स्ट्रक्चर एंड दे आर नॉट मूवेबल कैरियर्स. जस्ट हमने इंडिकेट किया कि आपको डिप्लीशन रीजन मिल गया है, लेकिन अभी हमारे पास चार्जेस के फ्लो का कोई मैकेनिज्म नहीं बना. यू जस्ट गेट अ डिप्लीशन रीजन. जब आप इस VG को फर्दर इनहेंस करेंगे तो उससे क्या होगा, व्हेन यू फर्दर इनहेंस दिस VG, further increase this VG, ये डिप्लीशन रीजन फर्दर इनहेंस होगा, एंड एट द सेम टाइम ये जो सराउंडिंग रीजन्स हैं, जो नेबरिंग रीजन्स हैं, N प्लस सोर्स एंड N प्लस ड्रेन रीजन, यहाँ पर आपके पास अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो व्हेन यू फर्दर इनहेंस VG, this VG will be able to attract these electrons and will start to accumulate them underneath this gate region.
अब ये जो आपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक्यूमुलेट कराए हैं, these are carriers, these are movable carriers and these are free electrons. अब इनको अब मूव किया जा सकता है and we can have a current conduction mechanism as a consequence of that. So let's take a look at it again. हमने कहा कि जब पहले आपने Vg एक पॉजिटिव Vg अप्लाई की, तो since p type substrate is has abundance of holes present, so these holes will be repelled and will be pushed downwards. As a consequence, you get a depletion region, but this depletion region is just comprised of negative ions because of holes being pushed downwards, and these negative ions are not carriers. These cannot be moved. These are locked in the lattice structure of the semiconductor. जब आपने मजीद Vg को बढ़ाया, so you were able to attract the free electrons from this neighboring source and drain regions. Once you are able to attract these electrons start to accumulate underneath the gate terminal, hence forming a collection of electrons that we call a channel. इसको हम channel का नाम देते हैं. ये जो electrons की collection यहाँ पर हमने accumulate कर दी है, this is called a channel. और ये चूँकि electrons की collection है, so that's why we call it an n channel. इसको हम n channel कहेंगे because it's a collection of electrons underneath the gate terminal. अब आप यहाँ पर गौर कीजिए, तो you are able to see कि यहाँ पर एक n plus region है which has abundance of electrons available, एक और n plus region है which has abundance of electrons available, और यहाँ पर एक channel भी आपने बना दिया, एक और collection of electrons भी आपने available कर दी. So just like जिस तरह अगर आप कंडक्टर की एग्जांपल लें, तो कंडक्टर में क्या होता है, you have abundance of free electrons available in a conductor, और जब आप इसके क्रॉस को इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे, तो these electrons will experience a drift and will start moving and hence we get a current. Similarly यहाँ पर भी देखिए, अब अगर हम VDS अप्लाई करेंगे, अब once we have this channel, once we have this collection of electrons available underneath the gate terminal, अब अगर यहाँ पर आप एक वोल्टेज VDS अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अगर एक वोल्टेज VDS में अप्लाई करूंगा, तो यू विल सी कि दीज यू हैव अ मैकेनिज्म फॉर करंट फ्लो. इलेक्ट्रॉन्स इधर भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन्स इधर भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन्स इधर भी अवेलेबल है, और अब अगर आप इस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अक्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस अ ड्रिफ्ट फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, फॉर्मिंग अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from source to drain, and as a consequence a conventional current will start flowing from drain to source, opposite to the direction of flow of electrons. So electrons will be flowing from source to drain, and as a consequence the conventional current will be flowing from drain to source. So this is the basic idea कि किस तरीके से MOSFET काम करता है. ये जरा देखिए, दोनों फिगर्स क्लियर हैं? इनमें कोई क्वेश्चन हो तो बताइए. सर इधर ड्रेन के बजाय सोर्स पे भी वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप सोर्स पे अप्लाई करें तो वो रोल चेंज हो जाता है. यूजुअली हम सोर्स इसी को कहते हैं जिसे हम ग्राउंड रखते हैं और जिसकी रिस्पेक्ट से हम VG अप्लाई करते हैं. सो यूजुअली ये कन्वेंशन है कि आप सोर्स उस टर्मिनल को कहते हैं जिसकी रिस्पेक्ट से आप VG अप्लाई करते हैं. तो यूजुअली विल बी टॉकिंग अबाउट कि सोर्स इज ग्राउंडेड एंड VGS इज बीइंग अप्लाइड. अगर आप चेंज करें तो आप सॉर्ट ऑफ ये कह रहे हैं कि दिस टर्मिनल इज हैज बिकम अ ड्रेन टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल इज नाउ द सोर्स टर्मिनल. नोट करें कि डिवाइस सिमेट्रिक है. BJT was not a symmetric device, but MOSFET is a symmetric device. और जब तक आप सोर्स को चूज नहीं करते, आप किसी भी टर्मिनल को एज अ सोर्स यूज कर सकते हैं, किसी भी टर्मिनल को एज अ ड्रेन यूज कर सकते हैं. बट वंस यू हैव कनेक्टेड one of the n plus regions to the body terminal, so that terminal will become the source and the other terminal will become the drain terminal. ओके सर. सो ये वो सिचुएशन थी जिसमें हमने जस्ट चैनल क्रिएट किए, और अब जब हम VDS को अप्लाई करेंगे तो देन वी विल गेट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस a conventional current will be flowing from drain to source into the drain out of the source terminal. Also note कीजिए कि since यहाँ पर आपके पास जब आप यहाँ पर एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो you will get a current flow,
ID, and you will get IS. A gate is physically insulated. गेट के इलेक्ट्रोड और सेमीकंडक्टर के बीच में हमने खुद एक deliberately एक इंसुलेशन प्लेस की है. So for the purpose of low frequencies and particularly DC, Ig is equal to 0. And as a consequence of supernode principle, Is is equal to Id. So MOSFET के केस में ये एक आसानी है कि Ig is equal to 0. नोट करें हाई फ्रिक्वेंसी के केस में there will be some capacitance associated with gate, and as a consequence कुछ आपको उस कैपेसिटेंस के इफेक्ट को मॉडल करना पड़ेगा, जो कि जब हम हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पांस को स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में तो फिर हम उन डिटेल्स को देखेंगे. फॉर द पर्पस ऑफ दिस करंट सेमेस्टर, सिंस गेट इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सबस्ट्रेट, so Ig is equal to 0, and as a consequence source current is equal to the drain current Id. So now we have created a channel. So इस collection of electrons को जो हमने यहाँ पर available कर दी है, this collection of electrons is called n channel. Why n channel? Because it's n type carriers and they are collected underneath the gate electrode and providing a connection between source and drain. तो इसको हम एक channel कह देते हैं. ये एक आपको mechanism provide कर रहे हैं for the current flow between drain and source. So this is called an n channel. नोट कीजिए कि ये n channel enhance होगा जब आप VGS को मजीद बढ़ाएंगे. What I mean by enhancement of the channel is कि channel की डेप्थ बढ़ेगी. अगर मैं मजीद VGS को इंक्रीज करूं तो चैनल की डेप्थ मजीद बढ़ेगी, because I'll be able to attract more electrons from the neighboring regions and collect them underneath the gate terminal. So I will be able to enhance the channel when I enhance the voltage VGS. So that's why we call this an enhancement type MOSFET. So इसको n channel MOSFET कहते हैं क्योंकि n टाइप का चैनल बन रहा है. इसको enhancement type MOSFET कहते हैं क्योंकि VGS को जब आप बढ़ाते हैं तो चैनल एनहेंस होता है, चैनल की डेप्थ भी बढ़ती जाती है. Also this n channel MOSFET is also called an NMOS transistor. So ये एक ही बात है. आप n channel MOSFET कह दें या इसको NMOS transistor कह दें, one and the same thing. So this is called n channel MOSFET or an NMOS transistor. So अभी हमने बात की है कि आपको इधर एक चैनल क्रिएट करना पड़ता है. जब तक चैनल नहीं है, we don't have a mechanism for current flow. Once we have a channel, then we have a connection between drain and source, and we can apply a drain to source voltage and drift those electrons, and as a consequence have some drain current. So we need a channel. We need to exceed some voltage that creates a channel. So in other words, VGS, the gate to source voltage, must exceed a certain value to get a channel. So that value is denoted by Vt, V small t to differentiate it from V capital T, जो कि हम thermal voltage के लिए use कर रहे थे in case of BJTs and diodes. So उसे differentiate करने के लिए इसको हम V small t use करेंगे, and this is called threshold voltage. So what we are saying is कि VGS has to exceed this threshold voltage to have a sufficient number of free electrons available in the channel region. So जब तक आपके पास चैनल नहीं बनेगा, आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है करंट फ्लो का. तो चैनल बनाने के लिए you have to exceed a certain threshold value, that is called the threshold voltage, capital V small t. So once you exceed this threshold voltage, you get a channel. So इस वैल्यू को जिसको आपको एक्सीड करना पड़ता है चैनल बनाने के लिए, that is called the threshold voltage Vt. And Vt for an n channel MOSFET is positive. Later on हम p channel MOSFET में देखेंगे कि Vt for a p channel MOSFET is negative. That we do expect because p channel MOSFET is a dual device और तमाम polarities उसमें opposite होंगी relative to the n channel MOSFET. So n channel MOSFET में Vt is positive, and Vt की exactly क्या value है that can be read from the data sheet or from an experimental setup. So VGS has to exceed this Vt to get a channel, or in other words, if VGS is less than Vt, there is no mechanism for current flow and the mode of MOSFET is cut off. So अगर आपके पास channel है ही नहीं, if there isn't a channel present, then one can say that
the device is cut off. So MOSFET is cut off, वो cut off mode में operate कर रहे हैं when you don't have a channel. When VGS is less than VT, the mode of operation of the MOSFET is called cut off and no channel is present there for current conduction mechanism. When you have a channel, then we'll see कि आपके पास दो possible modes हैं, एक को हम ट्रायोड कहते हैं, एक को हम saturation कहते हैं, जो कि आप आगे देखते हैं. So there has to be a parameter that is called a threshold voltage, which must be exceeded to get reasonable number of free electrons available underneath the gate terminal to form a channel, and that value that must be exceeded by VGS to get a channel is called the threshold voltage VT. नोट कीजिए कि आपके पास इस केस में NMOS transistor में you have a P channel, you have an N plus region, you have an N plus region. इसको आप let's say we call it a source, we call it a drain. यहाँ पर हम इंसुलेटर ग्रो किया हुआ है और उसके ऊपर एक मेटलाइजेशन की लेयर है. When you get a channel when VGS is greater than VT, when VGS is greater than VT, you have a channel, or in other words you have a collection of electrons available. So यहाँ पर देखें ये channel along with the gate terminal forms a capacitor. Parallel plate capacitor recall करें, इसमें क्या आपकी requirement है? Parallel plate capacitor के केस में आपको दो conductors चाहिए थे, बीच में कोई insulator की layer चाहिए थी. दो कंडक्टर्स आपको क्यों चाहिए थे? बिकॉज कंडक्टर्स में आपके पास एक अबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, राइट? सो यहाँ पर आपके पास एक कंडक्टर, ये अबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा कंडक्टर नहीं है लेकिन आपने खुद से एक चैनल बना दिए और वो अबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए. सो बिटवीन दिस कंडक्टर विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस चैनल with abundance of free electrons, this is the insulator layer, silicon dioxide. So you can see that we have a parallel plate capacitor here. Why I am emphasizing that we have a parallel plate capacitor here? Because we would like to use these parallel plate capacitor relations to determine expressions for the drain current. So looking at the structure of the parallel of this MOSFET, one can see that we have a parallel plate capacitor formed between the gate terminal and the channel. क्योंकि गेट और चैनल के बीच में आपके पास ये इंसुलेटर की लेयर है, which is silicon dioxide, which acts as an insulator. So you are getting a parallel plate capacitor here, which means कि parallel plate capacitor के relations को use करके भी हम इसकी relations को develop कर सकते हैं. So we would like to define another voltage. Since हमने कहा है कि अगर VGS less than, हमने कहा है कि if VGS is less than VT, you don't have a channel. So channel तब बनता है when VGS exceeds VT. तो तब channel बनता है. So channel जब बनेगा तब हम कह सकते हैं कि यार एक parallel plate capacitor आपके पास implement हो गया between the gate electrode and the channel. जब चैनल नहीं एग्जिस्ट कर रहा तब कोई ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं है, क्योंकि नीचे आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है. सो VGS व्हेन एक्सीड्स VT, देन यू गेट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड देन यू कैन से कि चैनल अब इस तरह से एनहांस होगा, आप गेट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इतना एनहांस होगा, इतना ड्रेन करंट फ्लो करेगा एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. सो व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग हियर इज कि द वोल्टेज दैट मैटर्स इज द एक्सेस ऑफ VGS ओवर VT. So the quantity that is more important is VGS minus VT rather than VGS. So this quantity will indicate कि VGS VT से कितना ऊपर है, कितनी excess voltage available है after you get the channel. So that will determine कि channel की depth किस तरह होगी और drain current किस तरह flow करेगा. So the main quantity that will be able to control the flow of charges in this device is this quantity VGS minus VT rather than just VGS. So this we call the effective voltage or the overdrive voltage, because this is the voltage that matters. This is the voltage that will be able to control कि channel की depth कितनी होगी और drain current कितना flow करेगा. So VOV is called the effective voltage or the overdrive voltage and is indicating
the excess of VGS over VT, or mathematically VOV is equal to VGS minus VT. So this is the voltage that will matter, that will determine how much charges will accumulate underneath the gate electrode and how much drain current will be flowing through this MOSFET. So let's use the relation for कैपेसिटर, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा है कि कैपेसिटर के तौर पे इसको मॉडल करना पॉसिबल है. सो वी कैन यूज द बेसिक रिलेशन Q is equal to CV. We are just interested in its magnitude. Direction हमें already पता है. Electrons are flowing from source to drain, and as a consequence the conventional current is flowing from drain to source. So direction is not an issue. ID की direction already हमें मालूम है. So that's why we are emphasizing on just the magnitude here. So Q is C times V. So Q में कहा जा रहा है कि कैपेसिटेंस टोटल आप बताएं और वोल्टेज बताएं टोटल. तो वोल्टेज इस केस में VOV इसलिए है कि VOV आप VGS नहीं यूज करें, यहाँ पर VOV यूज करें बिकॉज VOV इज द इफेक्टिव वोल्टेज दैट मैटर्स. VGS जस्ट जो है वो इट हैज टू एक्सीड VT टू गेट दिस मॉडल वैलिड. ये रिलेशन वैलिड ही नहीं होती जब तक आप VT को एक्सीड नहीं करते. यहाँ पर ये जो आपके पास C ऑक्साइड WL लिखा हुआ है, C ऑक्साइड इज द ऑक्साइड कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया. दिस इज ऑक्साइड कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया एक्सप्रेस्ड इन फैरेड्स पर मीटर स्क्वायर. सो ये कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, विच मीन्स कि इसको जब आप एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास एक्चुअल कैपेसिटेंस आएगी. सो सिंस मॉसफेट के केस में एरिया आपका, लेट मी रीड्रॉ दिस, this is the length of the channel and this is some 3D geometry and this is the width of the channel. Sorry, यहाँ draw करना है. So length of the channel and width of the channel. So ये कोई rectangular area है जो कि आपका गेट इलेक्ट्रोड बनता है. So उसकी लेंथ जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द 2n+ रीजन्स है और उसकी विड्थ है कि वो 3D ज्योमेट्री में इनटू द पेज कितना एक्सटेंड हुआ है. So WL is the area of the gate. So WL times C oxide, this is basically the capacitance and this is basically the voltage that matters. ठीक है. So ये हम इस तरीके से क्यों सेपरेट करते हैं, WL को अलग-अलग करते हैं, क्योंकि टिपिकली इंटीग्रेटेड सर्किट में आपके पास जो डिफरेंट मॉसफेट्स होंगे उसकी डिफरेंट विड्थ्स होंगी, डिफरेंट लेंथ्स होंगी. सो दैट्स व्हाई वी प्रेफर कि इस तरीके से हम चार्ज का फ्लो निकालें ताकि डिफरेंट विड्थ और डिफरेंट लेंथ के लिए मॉसफेट को ये एनालिसिस करना पॉसिबल है. So C oxide is the oxide capacitance per unit area expressed in farads per meter square. W is the width of the channel, L is the length of the channel, and by definition oxide capacitance आप recall करें is epsilon A divided by the distance between the two plates T. So capacitance per unit area is epsilon over T. So यहाँ पर oxide capacitance per unit area is C oxide is epsilon oxide divided by T oxide, where epsilon oxide is the permittivity of the silicon dioxide और यहाँ पर relative dielectric constant आपके पास इस silicon dioxide के लिए, for silicon dioxide the relative dielectric constant is 3.9 और epsilon naught आपको पता है it's a constant 8.854 into 10⁻⁻12 farads per meter. T oxide is the oxide capacitance. ठीक है, गेट और सेमीकंडक्टर के बीच में ऑक्साइड कैपेसिटेंस की कितनी थिकनेस है, दैट इज योर T ऑक्साइड. सो अभी तक हमने केस वो देखे जिसमें आपने VGS अप्लाई किए लेकिन अभी VDS अप्लाई नहीं किए. सो लेट्स नाउ सी कि अगर आप एक स्मॉल VDS अप्लाई करें तो उससे हमारे पास क्या होगा. हमने पहले बात की है कि अगर आप VDS अप्लाई करेंगे तो नाउ यू हैव अ चैनल, VGS आपने सफिशिएंट अप्लाई किया हुआ है, VGS इज ग्रेटर देन VT एंड यू हैव अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हियर which we are naming this collection of electrons as a channel.
So we have a channel available here, and as a consequence जब आप VDS apply करते हैं तो these electrons will experience a force in a direction from source to drain and will start to flow from source to drain terminal, and as a consequence the conventional current will be in the opposite direction from drain to source terminal, and since gate is insulated Ig is equal to 0 and Is is equal to Id. अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्यों एम्फसाइज किया है कि VDS स्मॉल की बात हम कह रहे हैं? देखिए जरा, चैनल का ये जो एंड है, चैनल का ये जो एंड है, यहाँ पर क्या वोल्टेज अपीयर हो रही है? वी हैव Vg minus Vs or VGS. So channel depth at the source end is being determined by VGS. अब ये देखिए, ये वाला जो चैनल का एंड है, इधर क्या वोल्टेज आ रही है? दिस इज Vg minus Vd. So the channel depth at the drain terminal is being determined by VGD. तो हम अभी कह रहे हैं कि Vd बहुत स्मॉल है, is almost approaching to zero. और in other words हम कह रहे हैं कि VGS is almost the same as VGD. Why we are emphasizing on this? क्योंकि देखिए इस एंड के ऊपर VGS VT से जितना बड़ा होगा उतनी चैनल डेप्थ आपको मिलेगी। इस एंड के ऊपर VGD VT से कितना बड़ा होगा, that will determine the channel depth. And when you say कि VGS is almost equal to VGD, then that means कि channel depth is almost uniform. So channel depth at the source end is the same as the channel depth at the drain end. So the channel depth is uniform across the length of the channel. So if we consider the case VDS small, since Vs is 0, VDS small means Vd small, and Vd small means VGS is almost equal to VGD, and as a consequence the channel depth at the source end, this will be the same as the channel depth at the drain end, this one. So the two channel depths are exactly the same, and as a consequence of that we are getting a uniform depth channel. So source end की channel depth or drain end की channel depth are the same. So we are getting a uniform depth channel. अभी लेटर ऑन हम देखेंगे कि जब आप इसको बढ़ा देंगे तो फिर चैनल डेप्थ, अगर ये केस हम ना कंसीडर करें VDS स्मॉल का, बल्कि VDS अगर लार्ज हो तो द चैनल डेप्थ विल बिकम स्मॉलर एट द ड्रेन एंड, क्योंकि ड्रेन एंड के ऊपर इफेक्टिव वोल्टेज स्मॉलर है, और चैनल लेंथ एट द सोर्स एंड, channel depth at the source end is proportional to VGS minus VT. Channel
जी ये डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी आवाज़ सुन सकते हैं आप? यस सर। लेट मी जी शेयर स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, सो मैं ये कह रहा था कि अभी पहला केस हमने देखा था कि हमने जस्ट VGS अप्लाई किया था, और हमने साथ बात की है कि जैसे ही VDS आप अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस अ करंट फ्लोइंग फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। सो अभी के जो केस पहले हम कंसिडर करना चाह रहे हैं वो आपका है VDS स्मॉल केस। सो लेट मी एम्फसाइज कि व्हाई वी आर सेइंग कि VDS स्मॉल का केस हम पहले देखना चाह रहे हैं। सो देखिए इस एंड के ऊपर जो चैनल की डेप्थ है दैट इज बीइंग डिटरमिन्ड बाय VG minus Vs minus Vt. So the depth of the channel at this end is proportional to VGS minus Vt. Depth of the channel at the drain end is proportional to VGD minus VT, क्योंकि इस एंड पे आपका VG minus VD है जो वोल्टेज है। So the depth of the channel is proportional to VGD minus VG. तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि when VD, this can be written as VGS minus VDS minus VT. So we are saying when the case, for the case VDS very small, this is almost approaching to 0 and we have VGS minus VT. Or in other words, the depth of the channel is uniform. सोर्स एंड के ऊपर और ड्रेन एंड के ऊपर डेप्थ ऑफ द चैनल इज यूनिफॉर्म। यहाँ पर डेप्थ ऑफ द चैनल इज प्रोपोर्शनल टू VGS minus VT, and also at the drain end, since VDS is almost approaching to 0, the depth of the channel is again proportional to VGS minus VT. In other words, the channel is of uniform depth on both source and drain end. But if VDS is not small, अगर VDS small नहीं है तो उस केस में हम देखेंगे कि channel depth will be non-uniform. At the drain end, channel depth will be smaller. At the source end, the channel depth will be larger. So when VDS is not small, or not very small, not negligibly small, then at the source end, since channel depth is proportional to VGS minus VT, and at the drain end channel depth is proportional to VGD minus VT. So at the drain end channel depth will be smaller, at the source end channel depth will be larger, and as a consequence you will get a tapered channel. Rather than having a uniform channel, you will get a tapered channel. So इनके रिलेशंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का काम यहाँ पर ही एंड करते हैं। अभी जस्ट मैंने ये पॉइंट एम्फसाइज किया है कि अगर आप स्मॉल VDS अप्लाई करते हैं तो यू गेट अ यूनिफॉर्म चैनल। सो वी विल लुक एट कि इसकी किस तरह से रिलेशन निकाली जा सकती है, एंड देन वी विल सी के मोर जेनेरिक केस जिसमें आपके पास टेपर्ड चैनल होता है, उसके लिए ID की इक्वेशन आप कैसे निकाल सकते हैं। प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है, दोनों केसेस में आपने एवरेज इफेक्टिव वोल्टेज निकालनी होती है। यूनिफॉर्म चैनल में एवरेज इफेक्टिव वोल्टेज एंड इफेक्टिव वोल्टेज एट एनी पॉइंट along the length of the channel are the same, जबकि टेपर्ड चैनल के केस में एवरेज वैल्यू विल बी समथिंग डिफरेंट। तो दोनों केस में हमने एवरेज वैल्यू निकालनी है और उसकी मदद से हमने ड्रेन करंट की एक्सप्रेशन निकालनी है। सो आज का लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसको कंटिन्यू करेंगे एंड विल सी कि किस तरीके से आप रिलेशंस निकाल सकते हैं ड्रेन करंट के लिए, एंड देन बेस्ड ऑन दोज रिलेशंस हाउ कैन यू एनालाइज and design MOSFET circuits.